I'm a software developer and a stand-up comedian. But the sad part is I'm a better software developer than a stand-up comedian. What's cringe called? Moe. Boss love you. but My wife ने देखा कहती है ये सब क्या है. मैंने उसकी वीडियो देखी उसमें भी यही था. Okay, so I'll take the trauma wala point in a different direction. I'll tell you why. Because so trauma in general तो होता है लोगों को, but comedians को trauma बहुत different way में मिलता है. We comics give trauma to comics. Each other, exactly. And this is legit. Backstage में बहुत ज़्यादा trauma मिलता है. I'll tell you that. Like, I have been fat shamed so many times by these two. अबे मोटे चुप. भाई मैंने तुझे कभी ऐसा फैट शेप अच्छा किया होगा पता नहीं मतलब मुझे नहीं पता किया भैया जो तूने किया उसको harassment बोलते हैं. But तू तो बोल तू मी टू नहीं हो तो मी 3 बोलेगा कि तेरा. No, but Whatever takes a comedy to shut down, भाई मैं तो वही. No, but coming back to the trauma point, genuinely, ये तो मस्ती कर रहा है, but backstage में there's a lot of trauma. I Yes. मतलब where I come from मतलब जैसे मैं मतलब कि मैं majorly यार I believe कि यार मस्ती करते रहो कि throughout roasting comics I think प्रतीक्षित and I we are into it ठीक है he is also into it ये सारे ड्रामे कर रहा है but कि most all three of us are like that ठीक है but how I think about it is कि यार मुझे लगा स्कूल में मजे लेता था लोग बुरा मान जाते थे ठीक है स्कूल के दोस्त ठीक है कॉलेज में मजे लेता था कॉलेज के कुछ दोस्त बुरा मान जाते थे ठीक है बट जब मैं कॉमिक्स के साथ आया मुझे लगा इनके मजे लो ये तो कॉमिक्स ही हैं but that's not the case yaar because everybody right now all three of us I think we have very secure jobs ठीक है so प्रतीक्षित सॉरी मतलब पर मैंने तेरे को इंक्लूड yeah at least two of us we have very secure jobs Come on यार मजदूरी भी एक job है. being a bihari it had to be there but ठीक है कि मुझे ऐसा लगता है कि being having secure jobs plus people are very insecure about their comedy about how they go on stage how they are presenting तो मुझे लगता है इसीलिए I think comics also get affected But what's happening backstage? Because that's what I'm more interested in when he said backstage and bad. So I'll tell you a couple of pointers. Okay, so see, we three, we're actually toxic in terms of the comedy which we do, and बहुत लोग भी toxic है ना? अरे कितना खुशी से भाई अनुभव के बारे में अनुभव ने एक लड़के को दिल्ली भेज दिया भाई कि उसने कहा भाई दिल्ली सीन में रहो मतलब तू सोच दिल्ली इज अनसेफ फॉर वुमेन इट इज सेफ फॉर कॉमिक्स because of अनुभव So I made him my guinea pig. Yeah, I wanted him to upload videos on YouTube. See how it's working and everything. it's not Yeah. So far the experiment failed. What I like about this is he's not taking the name of the comic because you'll never know the name anyway. Oh my god, that's painful. No, I disagree. ऐसा नहीं है. वो अच्छा अब वो I hope कि वो भी अच्छा करे यार. Everybody has to do well. तो That's what's happening backstage. No, this is not happening. but that's मस्ती में बोल रहा हूँ. बैकस्टेज यार कि बैकस्टेज इशू ये भी रहता है ना जैसे कि मैं बीइंग वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि पीपल आर टॉकिंग बिहाइंड देयर बैक्स या फिर ये व्हिच हैपेंस इन एवरी अदर प्रोफेशन ठीक है इट्स नॉट जस्ट द केस ऑफ कॉमेडी ठीक है कि जहाँ वी डोंट लाइक द कॉमिक्स एंड कॉमिक्स आर सो मच इनटू कॉमेडी थ्रू आउट कि वी डोंट लाइक द अदर पर्सन्स कॉमेडी कि कुछ भी तू बोल देगा ना तू फनी से फनी चीज ले आएगा ना हमें नहीं पसंद आएगी until unless we like you ठीक है And Yeah, so I'll just take this. तो जनरली क्या होता है आप अभी कॉमेडी करने जा रहे हो आप एक जोक ट्राई करोगे राइट और न्यू जोक यू विल ट्राई विद अ कॉमिक कि इज इट नाइस आपको अच्छा लग रहा है एंड दैट पर्सन वोंट रिएक्ट
and in fact sometimes कि भाई इतना अच्छा नहीं है but तू try कर ले मुझे तो लड़ लगा so and imagine आप stage पे जा रहे हो that is the one motivation thing which you needed before going to stage so you bomb and what happens is वो comic उस वक्त नहीं हंसा है बोला कि लड़ but जब वहां पे करेगा bomb होगा उस वक्त हंसेगा तो जैसे क्या होता है देख जैसे ही क्राउड का साइलेंस है ना तो कॉमिक का लाफ्टर है के कॉमिक का लाफ्टर है तो क्राउड का साइलेंस है बट इसमें भी कॉमिक साले इतने वो होते हैं तुम साला ऑफिस से आए हो ठीक है तुम मैनेजर की सुन के आए हो तुम और फिर आते हैं और फिर तुम पहुंचे नहीं हो भाई ये वाला जोक सुन लेना भाई ये वाला अरे नहीं सुनना यार So adding to that, one time what happened a year back, a comic was narrating his joke to Jay, क्या and बोले Jay was like, क्या सही जोक है यार, तू प्लीज स्टेज पे करके जाके. As soon as the comic performed on stage, Jay backstage was like, क्या चूतिया लड़का है. प्लीज नो पर्सनल रेफरेंसेस अरे अपनी बात कर रहा हूँ but this happens अनुभव तूने क्यों बताया इसको ये चीज So generation 1 was supportive. Generation 5 यार I don't know fucking other we don't know we can't comment on that. हाँ कि we haven't had conversations with Zakir या फिर जो earlier AIB EIC जो भी थे तो we don't know I think मुझे तो लगता है comedy environment toxic ही होना चाहिए या होगा in fact that's how you grow because मुझे अभी याद है I think 4-5 months back एक comedian गया था नया था and he performed and he came to me and he's like आप बहुत दिन से perform कर रहे हो कैसा लगा आपको मैंने कहा कि good job यार good job तो समय पर लोग हंसे नहीं मैं कहा तभी तो good job तू जॉब कर जाके वही अच्छा है so generally see I have to do this otherwise क्या होता है we are not here for giving sympathy to people let's be honest about this we are trying to create comedy मैं in fact मैं अभी just mobile पे खोल रहा था this is our group it's called Toxic Lineup it's as it's shown मैं प्रतीक्षित और it's अनुभव called है Toxic Lineup we generally have that name so we are living up to the name यार पर लार्जर उसमें मैं देखूंगी चल ठीक है कॉमेडी का जो भी है बट यू वर टॉकिंग अबाउट ट्रॉमा ठीक है कि हाउ डज ट्रॉमा आल्सो This already sounds traumatizing. हाँ. Somebody who's preparing, yes coming, यार साथ and he's gonna be going on stage. imagine the audience not laughing and then comics making fun of you while they are not laughing it's very I'm disturbing probably gonna go back home traumatized. that Yeah, is I what would our probably objective is So that is how we eliminate comedy competition yes but again that वो ठीक है but we also support ऐसा नहीं है ये तो हम लोग मस्ती we are कर रहे trying to be funny कि कहीं ना कहीं हम मस्ती कर रहे हैं but we are also supportive of the other guy like I really नहीं I think Pratikshit has been into Pratikshit मेरे मतलब छोटे भाई जैसा I always say that कौन सा वाला नहीं छोटे भाई को हरास नहीं करते भाई तो नहीं तो यार he has been into comedy for the past 5 years ठीक है और I think one of the most funniest people that I know ठीक है Pratikshit is the most funniest again most funny भी नहीं I'm not मैं इसमें कोई पंचलाइन नहीं कुछ नहीं मारा कि ये इतना irregular था तो I tried my best कि मैं इसको रेगुलर कर सकूं क्योंकि मेरे को लगता है कि he is somebody who can crack it कि मैनेजर की पोस्ट के बट नहीं हाँ मुझे सच में लगता है मैं भर दिया वही बड़ी बात है भाई अच्छा है लेकिन नहीं जो तू ट्रॉमा वाला भी कह रहा था ना कि मैं वैसे बताऊं तो कि जैसे क्या in my life also जैसे कि मैं उतना गोरा नहीं हूँ या लोग ऐसा कि सावला ठीक है माँ के हिसाब से तो मैं गोरा ही हूँ बट ठीक है कि माँ तो बट नहीं सच है तो जैसे मेरी माँ हमेशा मतलब क्या जैसे माएँ बहुत परेशान रहती है ना कि वो आके कि परिवार वाले परेशान कर रहे तो वो मौसी के बारे में कहती थी कि यार ये मतलब बुआ के बारे में या मौसी जो भी थी बुआ के बारे में शायद कि यार ये नागिन जैसी है ये वो है मैं कहता मम्मी कैसी बातें कर रहे हो दिस इज नॉट राइट ठीक है और फिर जब बुआ आई और मैं क्रिकेट भी खेलता था तो यार क्रिकेट खेलते हो तुम 4 बजे जाते हो प्रैक्टिस पे तो तुम थोड़ा रंग वो हो जाता है मतलब सावले से काला ठीक है और फिर बुआ कहती है यार तू तो बिल्कुल नीग्रो जैसा लग रहा है और भाई मैंने कहा कि नहीं बुआ मम्मी भी सही कहती है आप नागिन ही हो कि इट इज सो सिंपल कि you have certain incidences मतलब कि कहीं ना कहीं So, if I'm understanding it right, the space is highly diverse with a lot of competition, Right. not only from within the comics as a community, and I think this is a community that is toxic on the inside, backstage. Yeah. But also you're getting competition from the externals, right? Yes, The yeah. meme guys, Yes. you know, the What people who are tough, reelers and stuff. So, in all of that, you are saying that you are not even making money, but you are paying money. So, Yeah. what is the life cycle of a comic? Like, how does that go? I'm interested in knowing
Because I think it's important for people to know कि comic वो laughter लाने के लिए Right. क्या करता है. See, you've already pointed out कि you're already paying and then about the life cycle point. So मैं अगर life cycle की बात करूँ, there are a lot of parameters for a comedian's life cycle. I'll take the money part because you've just pointed out कि you pay and everything. In general, एक कॉमिक ओपन माइक जब स्टार्ट करता है 200 के आसपास पे करता है Yes. एवरेज एक ये के लिए. एंड जनरली कॉमिक्स जो थोड़े सीरियस होते हैं almost every day they perform every day, ठीक है. Oh. Yeah, they have to build the set in a good shape. तो 365 days into 200 कर लो. 70,000. The banker has spoken. Banker has spoken. I have the I know the maths. So 70,000. मैं अकेला IIM से हूँ यहाँ, ठीक है. Oh, Being yeah. modest. Put that somewhere. Being modest, ठीक We है. had to put that he, somewhere. he's so insensitive. One day I called him and I said कि मेरी मम्मी बहुत बीमार है, वो 100 का टेम्परेचर. मेरा He's like कि मेरे कैट में 99.9. That's not even relevant. Like मेरी मम्मी को 100 का टेम्परेचर. like I am that insensitive. So- Not towards his mother, but towards his father. के हाँ. तो क्या कॉमिक स्लो है कि उसको पूरा साल लगा वो एक जोक प्रैक्टिस करने के लिए. तो एक जोक नहीं होता. जनरली व्हाट हैपेंस इज आप एक सेट बिल्ड करते हो ना, तो पहले नए नए जोक्स ट्राई करते हो एंड यू डोंट नो. फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल पे जोक मारा, मैंने अपने दोस्त पे जोक मारा. नाउ आई थिंक कि प्रॉब्ली मैं दोस्त पे बना सकता हूँ और दोस्त और मोबाइल पे बना सकता हूँ. बट उससे पहले मैंने और भी मल्टीपल जोक्स मारे हैं, प्रॉब्ली वो सेट में नहीं जा रहे हैं. तो आपने बहुत सारे जोक्स ट्राई किए जो आप ड्रॉप भी करते हो. बहुत सारे जोक्स वर्क नहीं करते प्रतीक्षित. तो जनरली सो इन जनरल बहुत सारे जोक्स वर्क नहीं करते. देन यू बिल्ड अ सेट, सो इट टेक्स टाइम. एंड And how long is the set supposed to be? What is the duration of a set? it depends completely on the comedian, Comedian. but average पकड़ लो it's about 12 to 15 minutes का एक सेट बनता है. I think साथ इसमें क्या है ना, ओवर टाइम जो भी इवॉल्व हुआ है ना कॉमेडी में, तो अर्लियर देयर वाज अ फॉर्मूला. तुम 4 मिनट के डालते थे करुणेश और ये लोग, ठीक है. फिर धीरे धीरे करते हुए मुझे लगता है लोग आए, आकाश गुप्ता और इन लोगों ने 7-8 मिनट के डाले. फिर कुछ बस्सी और या इन्होंने 12-14 मिनट के डाले जो फटने लगे. एंड देन अभी हम देखते हैं, अभी लोग शॉर्ट्स डाल के आगे आ रहे हैं. तो देयर इज नो, इट्स टोटली अपॉन द कॉमेडियन, ठीक है. जैसे मैंने मानिक महाना को सुना था, ठीक है. मानिक महाना हैड अ होल स्टोरी ऑफ 1.5 hours, ठीक है. एक ही स्टोरी. आई डोंट नो हाउ विल ही कट इट, मतलब आगे जाके भी वो करता है तो कि अब जैसे आकाश गुप्ता है, ही विल हैव 5 सेट्स जो 10-10, 12-12 मिनट के होंगे. तो इट्स इजी फॉर हिम टू अपलोड ऑन YouTube. So that is where the thing comes from. So now see his point. He's talking about popular comics, right? Manik Mahana, Akash Gupta, ये लोग already popular हो चुके हैं. But उससे पहले वाला स्टेप, you around 15 to 20 मिनट का एक सेट पेट बना रहे हो. Again वो सब डिपेंडिंग है. तो as I said, एक साल लगा 72,000, right? 72,000. 2 years it takes about 1,40,000. 2 साल जनरली लगते हैं एक सेट बनाने में. और ये आपने सिर्फ मतलब क्राउड रिएक्शन देखने के लिए, अपने जोक को इम्प्रूव करने के लिए आपने. Is it like you always can you choose your audiences जिनको आप ये जाके जोक सुनाने? Oh no, not at all. मैंने कितनी बार परफॉर्म किया है. मेरे घर में ज्यादा लोग थे. मैं जब स्टेज पे जा रहा हूँ वहाँ पे सामने सिर्फ 2 लोग हैं. But I have to perform. हाँ, that's true. और रिएक्शन वाली बात पे आई वुड से किसी कॉमेडी इज द मोस्ट लाइव फॉर्म ऑफ एन आर्ट, ठीक है. इन विच जैसे सिंगिंग है, ठीक है, यू हैव समथिंग टू लर्न फ्रॉम, ठीक है. एक राग होता है, राग यमन है, राग ये है. सो देयर आर 5 राग जो तुम शुरुआत में सीखते हो, फिर धीरे धीरे करते हो बढ़ता रहता है. सिंगिंग में, डांस में देयर इज द स्पेसिफिक, अगर तुम्हें कि कथकली सीखना है या कुछ सीख. कॉमेडी में इट्स लाइक इट्स अ वेरी सेल्फ लर्निंग आर्ट, ठीक है, जहाँ मैं खुद से सीख रहा हूँ बाय गोइंग ऑन स्टेज एंड सीइंग द ऑडियंसेस लाइव रिएक्शन. तो सोच, मैंने जोक मारा, ऑडियंस नहीं हंसा, दैट्स द रिएक्शन दैट आई नीड. मतलब आई वाज टेलिंग यू दैट मैं स्टोरी टेलिंग हूँ, तो मैंने 5 बार ट्राई किया कि डिफरेंट स्टोरीज चल जाए, कि कुछ और चले, अच्छा कुछ और हो सकता है क्या. सो दैट इज हाउ आई डू इट. प्रतीक्षित तेरा कुछ इसमें? So when I don't necessarily have a story to tell. Of course. Yeah. अबे यार ये तो ऐसा लग रहा है प्रतीक्षित आफ्टर 50 years. I don't have a story to After 50 years, I think 1 घंटा बनेगा मेरा. So what I do is randomly अगर कोई thought आ गया when you are traveling or something, so what I do is उसको stage पे जाके let's expand on it and make a minute of it. You love expanding, no? It was right there. Sorry. Go फोन on. भी इसीलिए खरीदा ताकि स्विगी एडजस्ट हो. स्विगी सौतेला बाप है. I feel Swiggy अगर हर किसी के यहाँ पे 100 MB का उसका 400 MB का होगा Swiggy का.
I feel I need some space, but I will be a fat joker. No, taking a cue from actually both of them. So he was mentioning different art forms, right? Singing, dancing. और एक इसमें बहुत important point है, singing, dancing में आपको जो reaction मिलता है ना, it's generally not in a bad direction. आप poetry भी कर लो, even if there's silence in the room, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि you are assuming कि वो समझ रहे हैं हमारी poetry, understand कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. Singing में even if you're giving shitty notes, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या बोलेंगे, क्लैप करेंगे, अरे ब्रो वाओ नाइस, ये वो बस. बट विद कॉमेडी अगर आपने समझ लो 10 मिनट्स आप परफॉर्म कर रहे हो, यू क्रैक गुड जोक्स फॉर 9 मिनट्स एंड द 10th मिनट यू डोंट क्रैक वन गुड जोक एंड पीपल लाइक प्रतीक्षित जो ऑडियंस में बैठे होंगे, they're like, अरे हक दिया ना भाई. एंड दैट हैपेंस. इमेजिन आप अपना किल करो, you're doing very well. So कॉमेडी इज एवरी मोमेंट वाला आर्ट, कि एक एक मोमेंट पे आपको अच्छा होना पड़ता है, एवरी फकिंग मोमेंट. So if I think I just want to dive a little bit deeper, like, you know, because I think, in my opinion, comedy is a stress buster for the audience. Because as an audience, why am I going to watch stand-up and why do I enjoy stand-up? Is because जो भी मेरे लाइफ में चल रहा है, monotony चल रहा है, I get a chance to break that monotony. You escape basically. I escape, right? Yes. And then like, you know, his style of jokes I can relate to. Right? कि जैसे सिगरेट वाली बात हो रही थी, right? He said the cigarette वाली thing to like the back. तो इसमें एक relevance मिलता है मुझे. Sometimes it takes me down the trip of nostalgia and there's humor attached to it. So it really kind of livens up my couple of minutes, like maybe an hour that I'm there at the show. Right. And I'm coming out fresh. Right. Right? I'm coming out with a whole fresh perspective and the monotony is broken. Absolutely. Right? But when I'm looking at the other side, listening to you, right, what I'm realizing is that somewhere it is a challenge, right? Because आप बता रहे हो कि साल भर में आपने 70,000 खर्चा कर दिए जोक प्रिपेयर करने के लिए. अच्छा, उसको अगर इम्प्रूव करने के लिए 2 साल लग गए, Right. तो आपने शायद 1.5 लाख डाल दिए उसमें. Almost. Right? और उसमें भी ऐसा होगा कि there is a lot of time that you may not get the right kind of audience to listen to your joke, wherein you may not get the right kind of laughter. Yes. Or the right kind of audience who's gonna understand that joke. Which is 90% I feel. Yes. My God. Yeah. तो क्या ये भी एक reason होता है to take that much time to refine your joke? I'll give you a very simple example. क्या होता है ना, कभी-कभी आप एक कॉमेडी क्लब में गए हो and the audience is sitting there and they are looking at the time. अरे 9 बज रहे हैं, शिट मम्मी बुला रही है, अभी टाइम लेट हो गया. मैं एक्चुअली पृथ्वी कैफे जाने वाला था, बट यहाँ पे कोई था नहीं, कोई कैब नहीं मिला, इसलिए बैठ गया. बिल्कुल सही कह रहा है. आई थिंक कि तू शो के लिए भी सोच हाउ मच अ टाइम एज एन ऑडियंस यू आर इन्वेस्टिंग. ठीक है, कि मुंबई की बात करते हैं, ठीक है, तू कांदीवली से आया है बांद्रा, ठीक है, पहले कार में तो 1 घंटे या 1.5 घंटा ट्रैवल करके आया है, ठीक है, उसके बाद वो 1.5 घंटे का शो चल रहा है. तो एज एन ऑडियंस ऑल्सो देयर सो मच इन्वेस्टमेंट दैट इज इन्वॉल्व, नॉट जस्ट एज अ कॉमिक कि वो 1.5 घंटा ये इन्वेस्ट किया, फिर 1.5 घंटा तेरा शो देखेगा. तो you also have to be on your toes. That is why the refinement of the material happens. कि आप 1 मिनट भी बैठोगे मैं आपको हंसा दूंगा. आप स्ट्रेस मत लो, आप 5 मिनट बैठो. That's why I think we हम जितना भी मजाक करें, जो भी करें, we respect audience a lot. बहुत हमारे लिए बहुत important है ब्रो भाई, कि आप बैठो 5 मिनट, आपको हंसा के ही छोड़ेंगे. तो एक हिस्सा हो गया that you are investing in making somebody laugh. Yes. So you are investing the money to make somebody laugh. I have a question. Does it also affect your personal life? It does ना यार साल कि मतलब think about it कि अगर if I am on stage, ठीक है, I have to be on time for the venue, ठीक है, कि there'll be around 1.5 hours that I invest अगर daily. So then that time I could have been with my wife, ठीक है, with my girlfriend maybe, कि अरे or both maybe, कि that is the amount of time कि मैं किसी और के साथ I could have been with my friends जो है नहीं, पर but He's so toxic. इसलिए मैं और प्रतीक्षित ही एक दूसरे के दोस्त हैं. अनुभव इज आवर बैकअप. पता तूने से तू बोला कि तू दोस्त है उसका, फोन में कुछ और बोल रहा था. Hi, my name is Sharik and I'm the founder of Impatient. Thank you for watching this video.
I hope you enjoyed it. This is a 5-part series that's dedicated to entertainment. Entertainment's important, especially humor, because humor is a great de-stressor, and I think everybody needs to de-stress, especially in India, wherein stress is at its highest, right? And stress shows on your skin. There are many ways that it show on your skin. I am certified in advanced dermatology by the British College of Dermatology, so I have a place to speak about it. I hope you subscribe to us. You like this video, you share it with your friends, help them de-stress, give them something humorous that they can laugh about, right? And we'll speak more about anti-stress skincare along the way, so watch out for that. Thank you.